माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है। जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और पारित करने वाले हैं। ये भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड के स्थान पे आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट के। माननीय सभापति जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पेनल कोड में पेनाल्टी पर इंफेसिस था, आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर इंफेसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। ये बहुत बड़ी सोच का अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर प्रस्तावित करता था कैसे लोगों को पेनाल्टी देना है, अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है वो सुरक्षा संहिता की कोई अपराधी हो भी तो उसकी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें है ही हैं कि कैसे सबूत हो, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उस पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति जी, आज मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पेनल कोड 1860 का थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों कानून को देखेंगे तो 1860 में इंडियन पेनल कोड आया, माननीय सभापति जी। एविडेंस एक्ट 1872 में आया और सीआरपीसी 1882 में आया। उसके पहले एक छोटा कानून था। माननीय सभापति जी, आपको याद होगा 1857 में भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ था जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत ठगाया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी बहादुर, हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, तात्या टोपे थे, हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भारत को शासन करना है तो मैं अंग्रेजों की एक बात की तारीफ करूंगा, कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा देके करेंगे। हाँ? जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून? ये तो 75 इयर्स के बाद, 151 साल के बाद, और आजादी के बाद 75 इयर्स के बाद। तो माननीय उपसभापति जी, कच्ची फांसी, तो हमने कहा कच्ची फांसी क्या हुआ? तो मालूम है कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया, आई कैप्टन स्कॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो एंड सो हेयर बाय गिव यू कैपिटल पनिशमेंट, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे माननीय सभापति जी क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। तो जो भी करना है वो कानून के दायरे में करना है। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाना है दंड के लिए, दंड देना है एक कानून की प्रक्रिया, तो सीआरपीसी ले आए, और फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था
लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई, माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ का ही है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों लगना चाहिए? 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए? ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि कोई औपनिवेशिक प्रतीक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आजादी आई तो जगह जगह जॉर्ज पंचम की मूर्तियां थी, क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां थी, बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी? उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा? ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने? ये जो पूरी सोच है उसको समझना बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आपने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभुराम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे, ये मुझे अल्फाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि उस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 500 साल क्यों? आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है उसका भी संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि 1500 अंग्रेजों के समय के कानून, जो पुराने कानून थे, अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जो तीनों पेनल न्याय संहिता है, क्षमा करेंगे पुरानी आदत जाती है, जाते जाते समय लगेगा, न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि पहले भी कई कमीशन आए थे, जैसे मालीमत कमीशन था, जैसे वर्मा कमीशन था, प्रोफेसर माधव मेनन कमीशन था, लेकिन ये पहला कानून में बदलाव है जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। और मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी आपका विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपी को चिट्ठी लिखी गई, एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल पॉइंट बनाया गया,
एकेडमिशियन से बात हुई, जजेस से बात हुई, रिटायर्ड जजेस से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर लोगों से बात हुई, और 158 कंसल्टेशन में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। तो ये कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, ये इस बात से बहुत ही स्पष्ट है कि आज जब 1500 कानूनों के निरस्त की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं, तो एक मन में और विचार आ रहा है। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी क्षमा करें, कोई बात नहीं, होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, क्षमा, आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं 2-3 बार सभापति जी बोला, बहुत विनम्र क्षमा चाहता हूं। ये जो हमारे बहुत से ब्रिटिश इंसिग्निया थे भारत की नौसेना में वगैरह में, इसका बदलाव भी कब हुआ? माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही हुआ ना, कि महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी, उसका जो सिंबल था, उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है। ये कितनी बड़ी बात है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके अदर कुछ पॉइंटेड तथ्यों पे आऊंगा। पुराने पेनल कोड में 511 प्रावधान थे, सेक्शंस थे, नए में 356 होंगे। 175 सेक्शन बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नए जोड़े गए हैं, 22 सेक्शन को निरस्त किया गया है। और भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह 170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। और भारतीय सुरक्षा संहिता के सीआरपीसी में जो, उसमें 533 प्रावधान होंगे, जिसमें 160 को बदल दिया गया है। 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया है। हर मैजेस्टी, हिर मैजेस्टी, द काउंसिल, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है, वो इस कानून का सार है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट क्या है मेरे विचार में? ये युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। ये युग सूचना का है, सूचना ताकत है। दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज पावर। दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज पावर। और आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मॉल्स, मैसेज ऑन डिवाइस आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज का पहाड़ और उसका भार कम होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में लुटते थे। अब आपका पूरा ट्रायल वीडियो इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं उनको जेल से लाना पड़ता है, थाने में, कोर्ट में, और रास्ते में क्या क्या होता है आप सुनते ही रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर्च और सीजन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये ना कहें कि पुलिस ने ये किया और ये नहीं किया। तो ये पारदर्शिता को स्थापित करता है। ये इस पूरे नए प्रस्तावित अधिनियम का बहुत बड़ा हिंग है। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं, तो मुझे अभिनंदन करना है भारत के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया है और कुछ ही वर्षों में 33,000 साइंस एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे। ये एक नया नौकरी का, एम्पावरमेंट का अवसर मिलने वाला है। अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैं तो माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि एक बार अपने स्तर से जरूर स्टेट्स की परख होनी चाहिए कि उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग
डिजिटली ट्रेंड हैं, एक चिंता का सवाल है। जब सबके पास मोबाइल जरूर है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है इसके बारे में थोड़ा देखने की जरूरत है। मैंने थोड़ा इसको और दूसरे रूप में देखा है, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, एक विषय मैं यहां पर उठाना चाहता हूं, इसमें बहुत चर्चा होती है, राइट ऑफ प्राइवेसी। आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा? तो ऐसे लोगों को मुझे एक बात कहनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय बहुत ही स्पष्ट हैं, ए क्रिमिनल हैज नो राइट टू प्राइवेसी, ए करप्ट पर्सन हैज नो राइट टू प्राइवेसी। वरना तो पुलिस उनको कभी गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। रांची में एक सांसद जी के यहां 350 करोड़ रुपए मिलेंगे तो इनकम टैक्स तो वहां जा ही नहीं सकती है, क्योंकि माय राइट टू प्राइवेसी मेरे घर में घुस रहे हैं। तो इस पर दुनिया का कानून बहुत ही स्पष्ट है। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संबंध में बार बार राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा उनको कानून पढ़ने की जरूरत है। और पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दिस राइट ऑफ प्राइवेसी विच इज अ फंडामेंटल राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कंडोन करप्शन, टू कंडोन क्राइम। तो ये बात, ये प्रिंसिपल समझना जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि ये विषय रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे अधिनियम की एक और चीज को समझना जरूरी है। चूंकि इंडियन पेनल कोड दंड पर था, इसलिए कई प्रमुख अपराध नीचे थे और अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने वाले प्रावधान ऊपर थे। इस पूरी सोच को भारतीय न्याय अधिनियम में बदला गया है। मतलब महिला संबंधित कानून सबसे ऊपर है, इस बात को समझा जाए। ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये सोच बहुत ही अच्छी लगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए कानून हमारी सोच में अंतर है कि महिला, बच्चे, बहुत विस्तार से उसको रखा गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उसको बताएंगे। और जो पहले जो मानव संबंधित ऑफेंस थे, 302 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मर्डर वगैरह, डाउरी लेकर के, और बलात्कार, ये सब कहां से कहां तक थे? ये चैप्टर रोमन 6 में थे, चैप्टर रोमन 16 में थे। और 302 था हत्या का पूरा विश्लेषण और वो अपराध। अब ये सीधा ऊपर आ गया है और काफी जो मैंने भाग महिलाओं, बच्चों के बाद इसको बताया जाता है। जो मैंने कहा बलात्कार का प्रावधान वो सब न्याय संहिता के धारा 63 और 64 में है। तो 376 से 63 64 ये सोच का है, मैं कहना चाहता हूं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग। एक बात जो और कही गई है और जो दो प्रावधान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। सर, एक होता है समरी ट्रायल, एक होता है वारंट ट्रायल। समरी ट्रायल होता है पुराने कानून में 2 साल या उससे कम की सजा है तो आपका तेज ट्रायल चलेगा। अब सिर्फ एक काम किया माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल में कि समरी ट्रायल के सजा वाले को 2 से 3 साल कर दिया। तो जब 3 साल तक की सजा होगी उसका समरी ट्रायल होगा। तो इसके कारण क्या हुआ? जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हजारों हजार केसेस पड़े हुए हैं, वो सीधा चले जाएंगे नीचे कोर्ट में, उनका समरी ट्रायल होगा तो पेंडेंसी खत्म होगी। इसे कहते हैं इनोवेटिव सोच। और एक और मुझे बात बड़ी अच्छी लगी जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि बहस हो गई, जज साहब बैठे हुए, निर्णय आएगा, पहले तारीख पर तारीख है, फिर बहस। अब बहस पर माय लॉर्ड का जब मूड होगा तो निर्णय देंगे। इसमें इस बात का प्रावधान है कि आपको निश्चित समय अवधि पर चार्ज फ्रेम होने के बाद मामले की सुनवाई होगी और सुनवाई करने के बाद
आपको 30 दिन के अंदर निर्णय देना होगा और 7 दिन में उसको लोड करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको अपेक्षा है तो आप जयपुर में बटन दबा के देखें, मैं पटना से बटन दबा के देखूं कि निर्णय क्या आया। तो ये जो अनावश्यक, बड़े सम्मान से कहता हूं, ये बहुत पीड़ादायक है माननीय अध्यक्ष जी कि बड़े बड़े ट्रायल पेंडिंग है। और मैं माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील 7 साल, 8 साल, 15 साल पेंडिंग है। सिविल भी पेंडिंग, वो भी गलत है, लेकिन और कई बार हम लोग अखबार में सुनते हैं ना, किसी को 20 साल पहले आजीवन कारावास की सजा हुई, उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको 10 साल जेल में रह गया। किसी को 20 साल पहले रिहाई किया गया, 22 साल के बाद उसको कन्विक्ट कर दिया गया। तो क्यों होना चाहिए? अगर हम लोकतंत्र हैं तो इसका एक रास्ता निकलना चाहिए। और इस मामले में माननीय गृह मंत्री जरूर इसको कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि एक समस्या है हमारे लोकतंत्र की कि कोर्ट की सुनवाई कैसे होगी, ये माय लॉर्ड का काम है, न्यायपालिका का काम है, उसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम सलाह दे सकते हैं, तो काम तो उन्हें करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा, जजमेंट लिखना पड़ेगा, समय पर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? और एक बात है, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत किया गया है। आपने देखा होगा भारत सरकार बहुत पैसे देती है, कोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उसको बताया है, तो इसको समझना चाहिए। एक बात सभापति जी, अध्यक्ष जी, इसमें एक और बात आई है कि कुछ जो ऐसे नए ऑफेंस पैदा हुए, मोबाइल स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, चेन स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, ये रोज होता है। इस नए प्रस्तावित इस पर चर्चा कर रहे हैं, इन सबों को अलग से ऑफेंस बनाया गया है। और मैं गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करूंगा कि जो चैलेंजेस है इसको आपने सोचा है और इसको अलग से प्रावधान बनाया है। सर, आतंकवाद को लेकर के बहुत चर्चा होती है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इस कानून में आतंकवाद का डेफिनेशन भी रखा गया है और बहुत विस्तार से रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार इस सदन में ह्यूमन राइट्स की चर्चा होती है, बार बार इस सदन में क्या क्या बातें, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। मैं उन लोगों को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उसी धारा 19 में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी में 19(2) भी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द sovereignty and integrity of India, security of India, your freedom of speech can be reasonably restricted। और ये हमने नहीं बनाया है, ये तब से है जब धारा 19 का जन्म हुआ था, यानी जब उनकी सरकार थी। और ये बनाने वाले कौन लोग थे? डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिल्कुल उस गांधी जी के अनुयायी थे, फिर भी उनको लगा कि भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, ये बहुत आवश्यक है। आज आतंकवाद से खतरा है या नहीं है? आतंकवादी देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं है? इसलिए आतंकवाद को एक अपराध मानने की जरूरत है। और ये वही लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इस सदन में कुछ दिनों पहले, और आपका बहुत अध्यक्ष जी अभिनंदन कि आपने जो पत्र लिखा हम लोग को और विस्तार से बताया, बहुत ही भावुक था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस सदन में जो घटना हुई उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में समस्या है कि नहीं? केरला में समस्या है कि नहीं? अगर विपक्ष के द्वारा बंगाल में है कि नहीं? तो क्या अगर इन विपक्ष के विधानसभाओं में कुछ लोग कूद कर करके आग लगाने की कोशिश करें, पाउडर गिराने की कोशिश करें, तो उनको उचित लगेगा क्या? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र नियमों से चलता है, लोकतंत्र संयम से चलता है। तो जो मैं देख रहा हूं उन लोगों की टिप्पणी, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगा कि उसको रखूं। एक इस पूरे प्रावधान में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए?
तो उनके लिए एक शब्द था माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप, उनका क्या कहते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया, अब बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारे ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी, चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। तो सजा हो गई तो आप सजा याफ्ता है, तो बाकी उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, बाकी कुछ होगा। उसी प्रकार से अगर कोई विदेश में प्रॉपर्टी अपराध का लेता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत नए नए, हाँ, 0 FIR, मतलब मान लीजिए कोई घटना हो गई आसाम में, आप रहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, क्या करें? तो आप अपने क्षेत्र में उसका एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो सिस्टम से वहां चला जाएगा। तो बिल्कुल समाज के जो व्यवहारिक चुनौतियां थी, उसके निराकरण के लिए आपने बहुत ही प्रभावी काम किया है, तो मैं तो पुनः अभिनंदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, एक बात, थोड़ा मैं लंबा बोल चुका, मैं अब समाप्त कर रहा हूं। एक ऐसा विषय था कि बड़ा बड़ा मेरा प्रिय विषय था, इसलिए मैं थोड़ा नहीं, मैंने देखा कि मैं थोड़ा 35 मिनट बोल गया, इसलिए लंबा नहीं बोलूंगा। एक बात मुझे और लगती है, इसमें प्रश्न नहीं पूछते, अरे ये मैं मनती नहीं पहले है, मुझे पूरा तो बोले दीजिए। ये मनती नहीं कानून है। आ रहा है, नया ये कानून आ रहा है, इसमें आपका रोजगार घटेगा या बढ़ेगा? इस पर आपसे हम बाहर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, इस हाउस के कई मेंबरान का, ठीक है? बैठ के बात करेंगे। सभापति जी, एक और बात मुझे कहनी थी। एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इसमें है, कम्युनिटी सर्विस बाय वे ऑफ पनिशमेंट। कि आपने कोई अपराध किया, पेटी ऑफेंस किया, तो जाइए थोड़ा सा समाज सेवा आप करिए, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और इससे बहुत लोगों को सुधारने में अच्छा अवसर मिलेगा। और इसमें डिफेमेशन भी कम्युनिटी सर्विस में आता है। तो उस साइड के कुछ प्रमुख मेंबरान जो हैं, जो बार बार कई बातें कहते हैं, तो शायद वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो कुछ मानसिक सुधार होगा। मैंने ठीक बोला ना? हाँ? सभापति जी, मैं बहुत समर्थन करता हूं इस बिल का, ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अभिनंदन माननीय गृह मंत्री जी आपका, माननीय प्रधानमंत्री। बड़ा श्री गजानन कीर्तिकार जी। Sabhapati ji, I am grateful to you for giving me that opportunity. At the outset, I express my wholehearted support on behalf of my Shiva Sena party for this, in English they call it Citizen Security Second Amendment. It has been priority to curb day by day increasing crimes all over India. The crime mongers are not afraid of police action or law courts, since they know well that they can be punished soon for their crimes to unlawful activities. All over India, 806 districts have been formed in 28 states and 8 union territories. To deal crime and civil cases, 672 district courts and 25 higher courts have been established and working effectively. Adhyaksha ji, though the total sanctioned strength of judges in the country is 1,443, only 785 judges have been appointed. Thus, there are 658 posts of judges lying vacant. This has resulted in large number of pending cases, say approximately 5 lakhs and plus, all over the India.
The total number of cases pending for more than 30 years is 1,69,000 and 4.3 crores in high courts throughout India. Considering large number of pending cases in the court, the top priority should be given to fill up the vacancies of judges. Not only this, but it is also necessary to increase the number of courts and judges. This only can have deterrent of effect on the crime and in the court. The citizens who are waiting justice in their year-long cases will be happy to get final verdict in the court with reasonable time. The Bharatiya Nagari Suraksha Second Sahita 2023 now includes a new section 532 as part of our commitment to creating a digital India. As per the same trial and proceeding under this code may be held in electronic mode by use of electronic communication or use of auto-video electronic means. FIR plays a vital role in initiating criminal proceeding and taking the guilt party. Despite multiple attempts to streamline the process, a more hurdle still persists in the form of delay in lodging FIR. The Code of Criminal Procedure CRPC Section 154 is set to undergo an important modification through the BNSS 2. The modification would add Section 173, which states that FIR for cognizable offense can be filed through electronic means, irrespective of the area where the offense occurred. And also, this is differed from the process of uploading FIR online by police, which pertain to making a traditionally filed FIR available in digital form. Under this section, the police officer is mandated to electronically record the information and requiring the informant signature with 3 days. BSSN 2 will mandate for the provision of a promptly deliver free of cost copy of the recorded information to the informant or the victim. That is clause 173/2. This approach enables citizens to report crimes or provides informative via electronic means rather than resorting to in-person visit to police station, which might not be feasible due to security reason or other issue. Additionally, this may be in reducing the hesitancy shown by police officer to lodge an FIR because of its highly transparent nature. Now the bill proposed use to digital technology and in eliminating human errors or mischief and reduce the risk of corruption within the police force. This collective efforts aims to modernize and streamline the FIR registration. With this, I conclude, sir,
I really express my thanks that at this stage it is very much necessary that we are completing, we are at the threshold of 75 years of our India. No. So it was very much necessary. And I express my thanks to Amit Shah ji. Thank you. श्री बी मेहताब जी. So you had asked a very pertinent question, how much time have flown after the IPC, CRPC and Indian Evidence Act came into existence. I was just making a calculation. The IPC is 163 years old. And the Indian Evidence Act is 130 years old. And if we calculate 1972 as the promulgation of CRPC, though it was there earlier, so it is already 51 years old. But all these three acts, which is going to be repealed today, are the acts of 19th century and 20th century. We are in 21st century. So I would say 4 months ago, after the first introduction of 3 new pieces of legislation to overhaul the criminal justice system, the government, Honorable Minister for Home Affairs, placed it before us and revised it last week. The new criminal code makes some crucial changes. The bills for the first time bring terrorism, corruption, and organized crime under the ambit of ordinary criminal law. There were special laws earlier, but now it has come into the ordinary criminal law. These aspects were reserved for stringent special legislation since they upend the general protection by reversing the burden of proof on the accused, as per French jurisprudence, to restrict bail. At the time of introduction, the government had told us that 3 provisions of IPC, that is sedition, criminalization of homosexuality, and adultery, been repealed. Fine print shows Rajdroha been changed to Deshdroha. The narrative has been going around, doing the rounds for quite some time, that the Indian criminal justice system is not delivering. Victims of crime are often helpless. The cases are dragging endlessly and courts are getting choked. These are the 4 major issues which actually were perturbing us for quite some time. All this is being caused, it is said, because of colonial laws that somehow do not fit with Indian traditions, Indian customs. The magnificent edifice of the democratic structure today in India rests on the rule of law. As it is always said, as the civilization progressed, the society formed a ruler or created a Raja. But Raja has to perform his duty through law. It is not actually the Raja who protects the subjects. It is the law which protects the subject. That is the reason why we look up to our constitution with great hope and admiration. Because it is not the people who are prime ministers or chief justices. They don't give us justice. It is the law which protects every citizen of this country. It may be said the state does not protect the citizens. It is the law that protects the citizens. The law is supreme. The 3 bills that are before us today is replacing laws of 19th and 20th century. The question is whether they reflect current norms, of criminal jurisprudence. Numerous facets of Indian criminal justice system predate its independence from the British.
The IPC was modeled after the Irish Penal Code made by English rulers that came into effect in 1860, though the commission was formed in 1838 and took 20 years to frame the provisions of the Penal Code, and subsequently it got implemented in Ireland, but subsequently in India it got implemented in 1860. First enacted in 1861 and revised in 1973, the CRPC establishes rules for criminal proceedings. In 1872, the Indian Evidence Act, which was modeled as per the British jurisprudence, was passed. Since 1872, this has not undergone any significant changes, and now it is going to be changed with the approval of this House. Invariably, there have been some talk in media and also outside that how can we pronounce these Hindi versions of the law, Bharatiya Nyaya Sanghita. So, as Indians are very innovative, they have already found a way out. Instead of saying Bharatiya Nyaya Sanghita, lawyers are also saying BNS. So in that respect, that is not an issue in some quarters where they have a tendency not to utter Hindi names or Indian names. BNS is going to be primarily a primary legislation governing criminal offenses. This bill preserves several sections of IPC. Additional changes include the implementation of new laws targeting organized crime and terrorism. Strengthening of punishment for certain existing offenses is made and introduces community service as a form of punishment for some minor offenses. Importantly, excluded from consideration are specific violations under IPC that have been invalidated or modified by judicial rulings. These include acts of adultery and same-sex intercourse, and stipulated in section 377. BNS will have 365 sections instead of 511 sections. 175 sections have been changed, 8 new sections been added, and 27 sections been repealed. Now, I would come to 3 or 4 specific sections of BNS, Bharatiya Nyaya Sanghita. Now, IPC section 124A, that is sedition. Words spoken or written or by signs attempt to infuse hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, unquote, be punished. That is the sum total as sedition has been described. And large number of freedom fighters, including my parents, were all imprisoned because of this section and went behind bars for months and years together. But section 150 of the BNS 2023 says, and I quote, or by electronic communication or by use of financial means excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India be punished. Instead of government, as I said earlier, established by law, the new section says endangers the sovereignty, unity and integrity of India. This is a very welcome step. But I find still some loopholes which need to be plugged. Instead of making incitement to violence or disruption to public order a condition precedent to invoke the charges, the proposed section 150 continues to criminalize any act that excites or attempts to excite secessionist activities or encourages feelings of separatist activities. Furthermore, penalizes a person who indulges in or commits any such act, thereby casting with the law enforcement agencies a greater discretion to decide
what can be bought within the fold of an act endangering some sovereignty, unity, and integrity of India for slapping the charges. This discrimination needs to be, I believe, this can be looked into, and it gives a very wide spectrum of discretion to the enforcing agencies. Thirdly, the term separatist activities can be interpreted in several ways and can be used as a political tool to curb opposition parties who organize protests against any of the policies tabled by the government. Then 153B of IPC have been recast as clause 195 of BNS, with an addition where 195(1) subclause D criminalizes the making or publication of false and misleading information jeopardizing the sovereignty, unity, and integrity or security of India. The phrasing of clause 195(1)D raises three potential causes for concern. False and misleading and jeopardizing, these are two words, renders the clause very vague. There is need of clarity. It leads to multiple interpretation. Similarly, the word jeopardizes can cover a wide, unforeseeable range of consequences. Why leave all this in the hands of discretionary decision makers? It should be noted that criminal law does indeed deal with the matter of determining what constitutes false information. It also does in other situations, such as making a false statement under oath or providing fraudulent evidence. But in this clause, due to subjective nature of determining truth or falsehood, despite the need to control the mass dissemination of misleading information, will become very challenging. Another issue which has been incorporated in BS is organized crime. Clause 109 and 1010 been introduced effectively to deal with organized crime. Clause 109 borrows heavily from the existing state legislations in organized crime, especially from Gujarat and from Maharashtra. That is also necessary. Clause 110 creates a separate category of petty organized crime from organized crime for the first time. In IPC section 120A deals with criminal conspiracy where two or more persons agree to commit a crime. Two things, gang criminality and racketeering have not been defined. So also anchor points. There is a word in the bill, anchor points. I fail to understand what it meant. There is no distinction between the commission of an offense and its attempt. So there is, it has to be, I think, needs to be looked into. Then concept of community service is not there in IPC. This is a welcome step, but BNS does not define what community service will entail and how it will be administered. On mob lynching, clause 101, subclause 2, and 115, subclause 4, introduces new provision against heinous crime of mob lynching without specifically using the term. Section 352 IPC is applied for murder. It says whoever commits murder shall be punished with death. The BNS, there is a phrase, personal belief or any other ground which is without any definitional clarity. Therefore, it is quite dangerous. On abortion, section 132 of IPC is there. Unfortunately, except for moving the provisions from section 312 and up to 316 to clause 86 to 90, no significant changes have been made. BNS does not even bother to change arcane terms such as quick with child with an appropriate word. There are certain other words also relating to a cart, relating to a horse. All these things have been there that needs to be removed because those were
the idea of 19th century, and most of them have crept in here. It repeats language that was in the 19th century. Medical and ethical understanding of pregnancy and abortion has undergone tremendous change in today's world that could have been brought into our in this BNS. Now coming to BNSS, this will replace CRPC 1973, and the major issue is here, audio video recording is now made in line with the increasing use of technology and by ensuring greater accountability and transparency in police investigation. Courts have time and again emphasized the need for utilization of audio video recording. Clause 105 in BNNS is new, which aims to record search and seizure through audio video electronic means, preferably cell phone. Instead of section 157 of CRPC, it is clause 176 relating to procedure for investigation. Proviso is added in the BNSS, which was absent in CRPC. However, section 161 and section 154 been retained in clause 180 and clause 173 of BNSS. Subclause 3 mandates for videography of the process of forensic evidence on mobile phone or any other electronic device, which is a safeguard against manipulation and irregularities. This is crucial safeguard to prevent torture and coercion of the accused during questioning in custody. But a significant drawback is that this is not mandatory requirement. It is certain whether subsequent recovery evidence need to be recorded audio video wise is not mentioned. There is no mention of audio video recording during investigation like spot inspection. Instead of section 164 of CRPC, under 183 of BNSS, recording of confessions and statements before a magistrate is crucial safeguard to preserve the rights of witness. Confession be recorded in the presence of a lawyer, which is all important safeguard against false confession. But this should have been made mandatory. The provision under section 321 of CRPC has a gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw from the prosecution of a case with the consent of the court without giving the victim a chance to be heard. But this is addressed in clause 360, allowing that the victim must be heard before such withdrawal is allowed. This is a significant step. The right to information for the victim has been expanded in BNSS. So in that respect, I believe BNSS has expanded the scope in protecting the victim in a very great way. One issue is relating to handcuffing. It falls short of well-settled constitutional threshold established to protect a person's right to dignity under Article 21. Only thing has come, economic offenders are now being exempted from handcuffing. Clause 398 is an entirely new addition, which provides every state government shall prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensuring protection of the witness. This is a welcome step, no doubt, but it merely reiterates the direction under Mahendra Chawla case, nothing more. Clause 173(6), so 173 subclause 3 introduces a mandate for the collection of forensic evidence by the forensic experts in all offenses punishable by imprisonment of 7 or more years. This clause broadens the scope of forensic experts, which could include
private experts without any regulatory body to ensure their proficiency or compliance with professional and ethical standards that could lead to problems. As we have institutes now in our country where boys and girls are studying forensic science, I think this scope is going to expand in a very great way. But we need a regulatory body also to look into that. Article 22 of the Constitution requires a person in police custody to be produced before a judicial magistrate within 24 hours. The CRPC provides this. The BNSS retains this provision. There is a phrase, occasion is past. This was not defined, but subsequently after the standing committee gave its report, there has been change in that. BNS specifies in petty cases, person be released as soon as possible within 24 hours. But it leaves a lot of things for the enforcing agency to their discretion. A demonstration I have participated. Police catch hold of me, takes me to a certain place, and takes me 25 kilometers, 25 kilometers away in a jungle and leaves me there. What can I say? I can only travel by foot and come back and say, yes, I have come back within 24 hours. But that's not the case. It happens. It happens with all political demonstrations. Now come to the last point, sir. Last bill, that is Bharatiya Saksha Bill, BSB. The Indian Evidence Act 1872 provides two kinds of evidence, documentary and oral evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper record. There is a need to reset the justice dispensation system. Appellate courts are overburdened with appeals. Victims waiting for years and under trial prisoners languishing in jail beyond their presumed conviction time. The policing system has not embraced the advancement of 21st century technology that has transformed investigation and criminology in other countries. Indian Evidence Act of 1872, sir, is a relic of the past. And we have discussed this aspect a number of times in this house earlier. The bill exhibits modern modifications, linguistic adjustments for gender, inclusivity and replacement of outdated terms such as insanity with mental illness. In the bill, the definition of documents has been expanded to include electronic or digital records on emails, server, logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidences, and voicemail messages stored on digital devices. The definition of evidence has been expanded to include any information given electronically which will enable the appearance of witnesses, accused, experts, and victims through electronic means. The BSB has incorporated most of the recommendations made by the Standing Committee on Home Affairs. Several drafting errors that were highlighted have been also addressed. Under the Indian Evidence Act, information received from an accused in police custody is admissible if it relates to a fact discovered, whereas similar information is not admissible if it was received from an accused outside police custody. The BSB retains this distinction. In 1960, I'm coming to the point why I'm mentioning it. In 1960, sir, the constitutionality of this provision was challenged on the ground that it creates an unjustifiable discrimination between persons in and outside custody. The Law Commission in 2003 suggested redrafting the provision to ensure that information relating to facts should be relevant, whether the statement was given in or outside
police custody. The Law Commission has made several recommendations which have not been incorporated, but overall, the BSP is in tune of time. Relating to, because this is also being discussed outside, I think some members may also be speaking on that aspect. If I give a statement before a police, I may be under duress. And this has been pronounced by the court that it's not admissible. If it is given before a magistrate, one thing has happened that before a lawyer also it can be recorded, as it is happening in some modern countries or some advanced countries. To a certain extent, the accused needs protection, especially from the law enforcing agency. That needs to be. In conclusion, sir, I may say laws introduced during the colonial era were enacted to keep the subjects, praja, as we say, the subjects that are the Indians in a line. Therefore, it is imperative that the outlook must be changed and law and order must be viewed outside the colonial lens. Since the drafting of new criminal law is in discussion, it is imperative that justice prevails, as drafting criminal law of a nation is not a regular practice. Sir, this reminds me of one thing that we are missing here in this house. It's for your consideration, sir. In the old house of present Samvidhan Sadan, there was a line on top of your chair. Dharma Chakra Pravartanaya. Wheel of righteousness shall prevail. Sanskrit mein Dharma Chakra Pravartanaya. What we do here, what we discuss here, ultimately it is the Dharma Chakra that we are pravartaning. So in that respect, you can find a suitable place. You can find a suitable place because that is something unique of our culture, our civilization. That can be considered. And here, history is in the making today. That new law for our criminal jurisprudence, our Indian criminal jurisprudence is being enacted. That's a great thing that is happening. And I personally thank our Home Minister for taking, and also the Prime Minister, for taking the initiative. Others could have done it, but they couldn't. They didn't. And you have taken that challenge upon yourself, and the government has taken that challenge upon itself. It is our credit that we are witness to this history in making. Thank you, sir. विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है और सदन में बैठे हम सभी साथीगण इतिहास बनते देख रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए आज इन 3 विधेयकों को सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया है, उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। आप तो डायरेक्टर जनरल पुलिस भी रहे ना सर, जो इंडियन पुलिस एक्ट और जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1878, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए वर्षों से कोशिश हो रही थी।
ढेर सारी कमेटियां बनी थी। उदाहरण के तौर पर बेज बरुआ समिति, मलिमथ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी और समय समय पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी बहुत सारे सुझाव दिए थे आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए। लेकिन 2019 के पहले इसमें कोई सार्थक पहल नहीं की गई। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में आदरणीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय ने इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया। ये 4 वर्षों का परिश्रम का फल है कि आज 3 विधेयक सदन के समक्ष लाए गए। इन विधेयकों को लाने के पहले वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन हुआ था और उस वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन में 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और 270 विधायकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। स्वयं गृह मंत्री जी ऐसी कंसल्टेशंस में 158 समय पर उपस्थित रहे हैं। इन तीनों विधेयकों को जब लोकसभा में उपस्थापित किया गया तो कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के रिकमेंडेशंस और सुझाव में संशोधन लाते हुए पुनः इसको सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट ये अंग्रेजों की हुकूमत को सुदृढ़ करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। ये दंड देने के लिए बनाए गए थे, ये न्याय देने के लिए नहीं बनाए गए थे। और आज जो हम विधेयक लेके आए हैं, जो सरकार ये विधेयक लेकर के आई है, उसकी जड़ में न्याय देने की भावना है, दंड देने की भावना है। अब मैं उन विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उन बातों को कतई दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा जो पूर्व के माननीय सांसदों ने अपने अपने क्रम में रखा है। 0 एफआईआर की बात हुई है। 0 एफआईआर पहले से प्रचलन में था, लेकिन उसको कानूनी अमला जामा पहनाने का कार्य इस विधेयक के माध्यम से हुआ है। 0 एफआईआर नागरिकों को सुविधा निश्चित रूप से प्रदान करेगा, इसलिए कि अपराध यदि किसी थाना क्षेत्र में हुआ है और दूसरे थाना क्षेत्र में उसको हमें रजिस्टर कराना है, तो हम रजिस्टर करा सकते हैं। वहां से जो एफआईआर है, जो रजिस्ट्रेशन जिस थाने का पड़ता है वहां चला जाएगा और रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। ये 15 दिनों के अंतर्गत इस प्रक्रिया को समाप्त कर लेना है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और 3 दिनों के अंतर्गत उस कंप्लेंट पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा और एफआईआर दायर हो जाएगा। एफआईआर इस प्रकार की एफआईआर दायर करने की जो सुविधा दी गई है नागरिकों को, निश्चित रूप से उस सुविधा को बहुत अच्छे ढंग से और बारीकी से संचालित करने की आवश्यकता है। नहीं तो मल्टीपल एफआईआर की समस्या इकट्ठा हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक रूप से विलंब होगा। एक 173(1) जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है, उसके अनुसार यौन शोषण के मामले में पीड़िता का जो बयान दर्ज करना है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और ये कंपल्सरी कर दिया गया है। पहले भी अनुसंधानकर्ता
अपने अपने इच्छा अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करते थे, लेकिन पहली बार इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। और जो 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मुकदमे हैं, उन मुकदमों के प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को जाना आवश्यक है। अब ये सवाल उठता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स कहां से आएंगे? तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और जैसी की सूचना है, हर 3 साल में, हर 3 साल पर 33 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे और 5 साल के भीतर इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की यदि व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है तो कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी होगी। कन्विक्शन रेट को 90% से ऊपर ले जाने की सरकार की मंशा है। एक और बात जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी कि किसी भी व्यक्ति की यदि गिरफ्तारी होती है थाने में, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एक एएसआई रैंक का ऑफिसर नामित होगा पुलिस स्टेशन में और जिले में भी। ये गिरफ्तारी की सूचना डीके बसु का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसमें ये था, इसको गिरफ्तारी की सूचना देनी थी, लेकिन थाने से किसी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना जो व्यक्ति पकड़ा जाता था उसके माता पिता या उसके नियर रिलेटिव्स को नहीं दी जाती थी। इसके इस प्रावधान के चलते अब उनको कंपल्सरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है कि वो उसकी सूचना देंगे ही देंगे। और सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दी जा सकती है और टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है। इस बीएनएस के प्रावधानों से पॉक्सो पीड़ितों को और बलात्कार के पीड़ितों को प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराना सुनिश्चित होगा। इस प्रकार की सुविधा कोई पहले नहीं थी और ये इस प्रकार की सुविधा निश्चित रूप से इस एक्ट के अनुसार दी गई है। पीड़िता का बयान बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी किया गया है। इस तरह की कार्रवाई को सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसी प्रकार बीएनएस की धारा 193 के अनुसार बच्चों के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए जाते हैं, उन अपराधों का अनुसंधान 2 महीने के अंतर्गत समाप्त किया जाना है और अनुसंधान में हुई प्रगति की जानकारी भी 90 दिनों के भीतर देनी है और उसके बाद हर 15 दिन जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होगा उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी जानी है। एफआईआर से लेकर के केस डायरी से लेकर के चार्जशीट से लेकर के जजमेंट तक की जितनी भी कार्रवाई है सबको डिजिटलाइज करने की बात कही गई है। आरोप पत्र को दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। विशेष परिस्थिति में कोर्ट की अनुमति से और 90 दिन का समय लिया जा सकता है, यानी 180 दिन के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत आपको उस केस का अनुसंधान समाप्त करना है। जो व्यवहारिक स्थिति है और जो आज देखने को मिलता है कि 90 दिनों की बात कौन कहे, 2-2 साल 3-3 साल तक या उससे भी ज्यादा अवधि तक कांड अनुसंधान के अंतर्गत लंबित रहते हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो धाराओं में प्रोविजन किया गया है,
जो धाराओं में प्रावधान किया गया है उन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, मॉनिटरिंग क्लोज होनी चाहिए और जो लोग भी इन प्रावधानों को नहीं मानते हैं या उन प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं उनके विरुद्ध डेटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। सारे कदमों पर, सारे स्टेजेस पर टाइमलाइन की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान 90 दिन के अंतर्गत समर्पित कर देना है। 90 दिन से यदि आवश्यकता ज्यादा है तो कोर्ट का परमिशन चाहिए। इसी तरह से एक बार जब केस कोर्ट पे कमिट हो जाता है तो 60 दिनों के भीतर जो पेपर्स, पुलिस पेपर्स उसको मिलने हैं मिल जाते हैं तो 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटीशन डाल देना है। और 60 दिनों के अंतर्गत यदि डिस्चार्ज पिटीशन आप नहीं डालते हैं तो उस पर आप अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। 30 दिनों के अंतर्गत एक बार ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 30 दिनों के अंतर्गत जजमेंट डिलीवर करना है और उसके बाद 7 दिनों के अंतर्गत उस जजमेंट को अपलोड कर देना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें टाइमलाइन सुनिश्चित किया गया है और इस टाइमलाइन को अडहेयर कराना, सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। एक और व्यवस्था की गई है जो राज्य सरकारों के स्तर से या अन्य स्तरों पर सिविल सर्वेंट या पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का आरोप पाया जाता है और उनको उस केस को कमिट करने की आवश्यकता होती है तो सैंक्शन लेना पड़ता है। अब सैंक्शन की स्थिति ये होती है कि राज्य सरकार उस पर लेकर के बैठे रहती है। उसमें अब 120 दिनों की बाध्यता बना दी गई है कि 120 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार को सैंक्शन देना होगा। यदि राज्य सरकार सैंक्शन नहीं देती है तो वो डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा। इसी तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, हालांकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, कि चाइल्ड इन एब्सेंशिया का प्रोविजन किया गया है, उसको ज्वाइंट ट्रायल माना जाएगा और ज्वाइंट ट्रायल मान करके उसको उसकी सुनवाई होगी और जो भी पनिशमेंट दे होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा और उसके लिए उसको आकर के कोर्ट के सामने अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट में अपील करना पड़ेगा। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जहां तक प्रश्न है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेशंस कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होते हैं, उसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है। ये प्रावधान इसमें किया गया है। जो इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया है वो समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल में जो पहले प्रोविजन था उसमें 2 साल जिस केस का पनिशमेंट होता था उसी को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन आज उसको बढ़ा करके 3 साल वाले केसेस को जिसमें पनिशमेंट है उसको समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाएगा, उसका समरी ट्रायल होगा। ऐसे केसेस की संख्या काफी है तो निश्चित रूप से जो लंबित कांड है और लंबित केसेज हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। हैंडकफिंग के बारे में एक बीच में मामला काफी पेचीदा हो गया था। अब इस प्रावधान के अंतर्गत शुरू में अरेस्ट करने के टाइम में और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के टाइम में हैंडकफिंग सर्टेन मामले में की जा सकती है। उन सारे मामलों का विस्तृत वर्णन किया गया है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। एक बात और जो इम्पोर्टेंट कही गई है कि केंद्र सरकार द्वारा यदि दया याचिका प्राप्त होने पर राज्य सरकार से कमेंट प्राप्त होने पर 60 दिनों के भीतर यथासंभव शीघ्र अपने मंतव्य के साथ राष्ट्रपति जी को भेज देने की आवश्यकता है। और कोई भी केस का विड्रॉल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि जो
कंप्लेंट है उसकी राय नहीं ले जाए। पहले क्या होता था कि जो दोषी पाए जाते थे वो निर्दिष्ट जो उनकी सजा की अवधि होती है उस अवधि के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने का मनमाने तरीके से उपयोग होता था। इस रिहाई में उन लोगों को रिहा करने का कोई प्रावधान नहीं है जिनको आजीवन कारावास दिया गया है या मौत की सजा सुनाई गई। अब इस एक नए प्रावधान के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति जी के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई पत्राचार हुआ है तो उस पत्राचार को कोर्ट नहीं मंगा सकता है, उसका अवलोकन नहीं कर सकता है। यह प्रावधान इसमें किया गया है। आईपीसी की 4-5 मुख्य बातें हैं जो सभी ने अपने वक्तव्य में कहा है, लेकिन वो सेडिशन और वो मॉब लिंचिंग और ट्रायल इन एब्सेंशिया या इलेक्शन रिलेटेड जो मैटर्स हैं जो आईपीसी में लाए गए हैं, वो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स जो है उस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उसके बारे में किसी ने कुछ कहना नहीं कहा है। ये एक चर्चा का विषय था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इलेक्शन से रिलेटेड जो केसेज हैं उनके बारे में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है, तो इसको आईपीसी में लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कतिपय कारणों से इसको आईपीसी के अंतर्गत लाया गया है। कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान किया गया है उससे कांडों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आएगी और इस प्रकार का प्रावधान दूसरे देशों में है, खास करके अमेरिका वगैरह में इसका प्रावधान पहले से ही है। जो 2-4 बातें जो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा, एक आईपीसी की धारा जो है 2021 और जो नए भारतीय न्याय संहिता में है, इसमें है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years of age, सेक्शन 20। सेक्शन 21 है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on this occasion. It has been said about a child who is more than 7 years of age, and it has been said about a child who is under 12 years of age. Nothing has been said again about a child who is of 7 years of age. So what about a child who is 7 years of age? He is neither less than 7 years nor less than 12 years. धारा 420 क्या हुआ बताइए? 420 क्या हुआ है बताइए? 420 तो कौन है? 420 अभी क्या हुआ है बोलो? 420 नहीं, 493 और 377 की बात कर रहे हैं। 420 क्या हुआ है बताइए ना, हम लोगों को जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 420 क्या हुआ? आप बोलिए। धारा 377 और 483 ये सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय समाज के नॉर्म्स के अनुसार और नॉर्म्स के दृष्टिकोण से ये न 377 समाप्त होना चाहिए और न 483 समाप्त होना चाहिए। ये दोनों प्रावधानों को रहना चाहिए। ये जो अब मेंटल इलनेस की जगह पर पुनः अनसाउंडनेस ऑफ माइंड स्थापित कर दिया गया है, इसलिए अब इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। बहुत सारे जो एरर्स थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स थे,
क्रॉस रेफरेंसेस थे, उन सारी चीजों को दूर कर दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा को काफी विस्तारित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं उन सबको इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। एविडेंस को भी काफी विस्तारित कर दिया गया है। उसमें भी जो एक्यूज और विटनेसेस और एक्सपर्ट्स और विक्टिम्स ये सब के मीनिंग्स को काफी विस्तारित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इनको इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता है। एक अंत में बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि कुछ एक प्रोविजन अभी भी ऐसे हैं जिनमें मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसमें जो सजा है वो कम है। जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो सजा है वो आईपीसी की सजा से ज्यादा है, बावजूद इसके इसमें सजा अपर्याप्त लगती है। इसी तरह से जो इम्पर्सनेट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, उसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना, ये भी सजा कुछ कम लगती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, एज ए एक्स पुलिस अफसर मैं कहना चाहूँगा कि जब हम इस कॉलोनियल एरा की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये कानून ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और ये कानून एक खास पर्पस के लिए बनाया गया था, उनकी खिलाफत जो करते थे उनको दंडित करने के लिए बनाया गया था, तो पुलिस को ब्रिटिशर्स ने कभी अच्छी निगाह से नहीं देखा, कभी उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने का उनका कारण था। आज जब हम नया कानून लेकर के आ रहे हैं, हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, फॉर में भी है, अगेंस्ट में भी है, लेकिन जो स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस अफसर इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी फ्री कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इसको सर्कमवेंट करके ये सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि जो उनके समक्ष जो एविडेंस आता है वो किस प्रकार से सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, और यदि वो किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो किस प्रकार से उनको दंडित करने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि ये जो भी आए, जो भी उनके समक्ष बयान आए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। और गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके आधार पर उसको सबूत के तौर पर उतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे तरीकों से इस तरह की जो चीजें हैं उसको समाप्त की जा सकती है। और कितने साल तक पुलिस पर आप अविश्वास करते रहेंगे? इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं को करना है, केस डायरी तो उन्हीं को लिखनी है, तो केवल स्टेटमेंट उनके समक्ष जो आएगा उस पर कहिएगा कि ये इनएडमिसिबल है, इसको कोर्ट में इसकी मान्यता नहीं है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये बोल दीजिए सर, अगर हाउस सहमति है तो 8 बजे तक। अगर हाउस सहमत है तो कार्य 8 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। हाउस का सहमत है? हाँ जी, धन्यवाद। श्री प्रिंस राज। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आज अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 3 कानूनों के समाप्त कर गए नए कानून लाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयास के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, हमने काफ़ी अपने सहयोगियों को सुना, यहाँ वरिष्ठ सांसद उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। रविशंकर प्रसाद जी, श्री सर आपने खुद भी बहुत अच्छे विस्तार में अपनी बातों को रखा। यहाँ पे श्री विष्णु दयाल राम जी ने अपनी बातों को रखा और बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई, इस बिल में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं।
सर मैं बताना चाहूंगा, हम अपना अनुभव सर बताना चाहेंगे। आज से करीबन 10 साल पहले जब हम विदेश गए थे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लंदन गए थे, तो वहां पे जब हम वहां के लोकल से बात करते थे, वहां नागरिकों से बात करते थे, तो एक जगह ये बात उठ के आई, वहां हमें ये कहा गया कि क्या अभी भी वही सदन में आप लोग जाते हैं जो हम लोगों ने बनाए थे। लेकिन सर आप समझ सकते हैं हमें उस वक्त कैसा लगा होगा और आज हमें कैसा महसूस हो रहा है जब हम यहाँ खड़े होके ये बात रख रहे हैं अपने स्वदेशी सदन में, और ये जो अंग्रेजी कानून है इसको बदल के जो स्वदेशी कानून है उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो सर आप महसूस कर सकते हैं हमें कितना फक्र हो रहा होगा आज के दिन। सर अंग्रेजी कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून है, पहला इंडियन पेनल कोड 1860 जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 है, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के रूप में स्थापित किया गया। सर ये जो कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून थे, ये जब बनाए गए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो उस वक्त के जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनको किस तरीके से उन्हें बचाया जाए और लोगों को किस तरह से दंडित किया जाए। लेकिन ये जो नए कानून जो आए हैं 3, इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की सुरक्षा करते हुए न्याय दिलाया जाए, इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में सजा से केवल सर अपराध को रोकने के लिए के भावना से किया गया है, आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। सर इससे हमारे क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम में बड़े पैमाने पे परिवर्तन आएगा। इस कानून में सर जब ये कानून बनाया गया, अभी हमने अपने अपने सीनियर्स को सुना, जब ये कानून का जब बनाया जा रहा था, इस पे करीबन 4 वर्षों से सर इस पे काम किया जा रहा था। करीबन 18 राज्यों, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, करीबन 142 एमपी के सुझाव, 270 एमएलए के सुझाव और कई जनता ने जो अपने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव के मद्देनजर रखते हुए ये इसकी रचना की गई है। सर कानून में दस्तावेजों की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एवं डिजिटल एविडेंस को भी कानूनी वैधता दी गई है और अत्याधुनिक तकनीकों का भी समाहित किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य किया गया है और दोष सिद्ध करने के परिणाम को बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। सर यहाँ पे जब कई बिल आते हैं तो बहुत चीजें इसमें होती हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है हर एक चीज का, जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब रेल बजट आता है तो लोगों की बस एक जगह कान टिकी होती है कि भाई हमें किराया कितना देना है। वही जब फाइनेंस बिल आता है तो लोगों को बस एक चीज होती है कि भाई हमारे पॉकेट से खर्चा कितना जाएगा, टैक्स कितना जाएगा। उसी तरीके से जो ये नया 3 कानून आया है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो ये टीवी जो पूरा देश देख रहा है, सभी को बस एक चीज का इंतजार है कि भाई जो हम केस दायर करते हैं और जो सुनने को आता है तारीख पे तारीख, वो कम से कम हमें कितना कम में हो जाए। ये आज जो जनता है, देश की जनता, हमें लगता है इसके प्रति देख रही होगी। और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम धन्यवाद देते हैं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया। और जो आरोप पत्र है दाखिल करने का समय सीमा 90 दिन तय किया गया है। किसी विभिन्न परिस्थिति होती है, किसी तरह की कोई परिस्थिति आ गई, उसमें 90 दिन को भी 90 दिन और उसको बढ़ाया जा सकता है, परमिशन लिया जा सकता है। कुल 180 दिन में जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। चार्जशीट मिलने के 60 दिनों में आरोप तय करने का प्रावधान है। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर अदालत को सजा सुनानी होगी।
इसके सालों सालों तक जो केसेस लटके होते हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने में इसमें आसानी होगी। सर, सबसे अहम जो हमारा देश भारत जो कई सदियों से जो आतंकवाद से जो लड़ाई लड़ रहा है, आज तो पूरा विश्व इस चीज को मानने को राजी हो गया है। पहले तो कोई नहीं मानते थे, लेकिन आतंकवाद, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध को भारतीय कानून के तहत लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इन कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सजा मिले एवं पुलिस अपने अधिकारों का कम से कम दुरुपयोग ना करे। सर, इन तीनों बिल ऐतिहासिक है। इंडियन क्रिमिनल ट्रायल प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में केसों को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। सर, इसमें ये चीजें जब आती हैं, हम बिहार से आते हैं सर, और आज भी हम जब अपने घर पे थे, कई हमारे समक्ष समस्याएं आती हैं, कई लोग अपना अपना ग्रीवांसेस लेके आते हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रीवांस ये होता है लोग के ऊपर अत्याचार। और जब गरीब लोग, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या पिछड़ा वर्ग हो, या गरीब लोग हो, जब उन पे अत्याचार होता है तो वो, जब उनके समाज के लोग कहते हैं भाई केस मत करो, केस करोगे लटक जाओगे, सालों साल केस चलेगा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा घर बिक जाएगा, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो सर, हमें ये लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है 3 नए कानून का, इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे SC, ST, OBC समाज और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगा। उनमें एक भरोसा जगेगा कि हाँ भाई, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो जाके न्याय के लिए वो मांग कर सकते हैं। सर, मैं पुनः अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। इन तीनों बिल लाने के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। और अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपनी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इन तीनों विधेयकों का पूर्ण जोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रिंस राज जी। तेजस्वी सूर्या जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर विषय रखने का मौका दिए हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। This august house is today witness to history in the making in the true sense, because what we are enacting today is a historic reform that will touch the lives of 140 crore Indians, not just for today, but for centuries to come. And while doing so, we are ridding ourselves of a 162-year-old colonial baggage and are moving towards a Swadeshi Vyavastha at the time when Bharat is entering the Amrit Kal of its glorious period of history. I want to thank and congratulate Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and a very visionary Home Minister Amit Shah ji for piloting this historic reform of India's criminal justice law. Adhyaksha, if you will spend a minute to understand the context in which our criminal justice system came to be introduced by the British, it comes to light that all the 3 criminal justice legislations, the IPC, the CRPC, as well as the Evidence Act, were enacted right after the 1857 First War of India uprising, First War of India's independence uprising. The objective of the then British government, while introducing these 3 legislations, was to subject the natives, subject the Indians to such a criminal justice system that will
obliterate, annihilate all kinds of possibilities of rebellion. So all the three laws, the Indian Penal Code, the CRPC, and the Evidence Act, were all enacted with this intention of subjecting the native population to humiliation and making sure that their self-confidence was always subjected to insults. The British understood that there are two important aspects of a society that need to be controlled to completely colonize and destabilize a native population. One was education, and the other was the criminal justice system. And Lord Macaulay, in his prophetic Education Minute, exhaustively mentions how the British tried to colonize, British tried their very best to remove from the memory, the civilizational memory of this country, our educational as well as criminal justice system that had been in practice for so long in the country. I must say today that when the country is the threshold of Amrit Kal, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have enacted the National Education Policy 2020, and today we are enacting these three Sanhitas, which is going to replace the colonial code. And in the true sense, we are moving away from colonization of education and colonization of our criminal jurisprudence. Today marks an important day also, Speaker Sir, because for about 160 long years and almost 7 decades after independence, the country's criminal justice system followed legislations which were made by the British, made for the welfare of the British, and made in Britain. Today, in those places, we are enacting a law that is made by Bharat, made in Bharat, and made by Bharatiyas for the welfare of Bharatiyas. This marks a very important step in our decolonization journey. While we are here, I would want to draw the attention of this House, Speaker Sir, to another important aspect of the British criminal jurisprudence, of how vicious the intent of the British was while bringing and enacting these legislations. One of the biggest examples of this intent of the British is in the example of the Criminal Tribes Act of 1871. Speaker Sir, in 1871, the British Raj enacted a legislation called the Criminal Tribes Act, under which large communities, large tribes were declared as criminals by birth, and they were subjected to multiple humiliations and restrictions. There were police manuals that were drafted enumerating long lists of how these criminal tribes must be dealt with, how they must be punished, how they must be abused. And for a long time, even after independence, Speaker Sir, many of our jail manuals contained these very provisions, and many tribes which were enumerated in these Criminal Tribes Act faced severe humiliations, both legally and socially. Many of the major castes of Hindu society, Ahirs, Gujars, Lodhi, Chamars, Pasi, like this, this was the word that was used by the British. Yes, it is unparliamentary. This was the words that were used by the British. Many of these communities, more than 130, 140 of them, they were declared as criminals by birth. And by 1947, at the time of our independence, more than 2 crore people existed in this country who were criminals by definition as criminals by birth.
This was the intent behind the criminal justice system of the British. This is just to show, this is just to explain the monumental difference that we are today making by moving out of the dark shadow of the British's criminal justice system and moving towards a completely Indian and Swadeshi justice system. I would suggest the names that have uttered should be removed. Only the numericals. Adhyakji, That is to be. with respect to the changes that have been made in these three legislations, I want to take a few minutes to highlight some very important changes. Under the BNS, importance has now been given, precedence has now been given to crimes against women and children. And some of the most important changes that have been made keeping in mind the protection, empowerment, and justice delivery for our sisters in the country. Not only the precedence in numbering reflects this intent of the government, but also providing for death penalty for gang rape of a minor girl is introduced for the first time. Most importantly, we are witnessing over the last few years a concerted attempt by a certain vested interest groups of suppressing their identity and luring young women under the false pretext of marriage. Even this has been declared an offense, and stringent provisions have been made to punish such attempts. We also keep observing, Speaker, sir, that there are multiple instances of hit and run cases, what we refer in a colloquial term. In most of these hit and run cases, it is always the rich who hit and run, and who are the poor, who do not have access to justice, who do not have access to power, who are left fighting for justice without any support. For a long time, this offense of hit and run was not codified, was not declared an offense. That has now been brought in. As also, offenses like chain snatching and mobile snatching, which is, if you go to any police station today, there is a board always in the police stations. If you will see, most of the cases that are reported in urban areas, at least in the country, are these chain snatching and mobile snatching cases. But unfortunately, we did not have a penal provision to deal with this. This has been added. We have also seen that whenever there are protests, in the name of displaying outrage, certain anti-social elements use that opportunity to damage public property. And public property amounting to crores get damaged. For the first time, under mischief, by expanding the provision, damage to public property has also been made an offense. And hereafter, any anti-social elements who will indulge in any such activity will be facing the music of the law. There were many provisions which were reflective of the colonial and Victorian morality of that era. Both sections 377 and section 497, which dealt with adultery, were a reflection of this Victorian morality. Both of that has been omitted, and we have now truly moved away from a pre-colonial legislation system to a post-colonial indigenous system. Speaker, sir, another aspect that gives us a great amount of joy is that for a long time, the Indian Penal Code was not fully applicable to the whole of India. It was applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. And in Jammu and Kashmir, we had the Ranbir Penal Code that was in existence. With this act and with the abrogation of the Article 370, the BNS will be applicable to all states of India, including the state of Jammu and Kashmir. This is another very important historic step that this Parliament has taken with this enactment. While these are some of the important changes that have been made to the BNS,
The Criminal Procedure Code was also crying for reform. Many committees, the mention of which has been made earlier, made reports on reports, committees gave voluminous suggestions, but none of that was implemented by earlier governments. Because the Criminal Procedure Code is that procedural law which is the foundational law on which criminal justice system is adjudicated, delivers justice. But it was the discrepancies inherent in the CRPC that led to the vast number of under trials that we have, pendency of cases that we have, the complexity of criminal justice system that we have, and the whole justice delayed is justice denied kind of a feeling that a large number of people in this country felt. That going to court itself was a punishment, was a vexatious issue. Many major changes are made under the CRPC to address the complexity of the procedure and make it more simple, keeping in interest, keeping the citizen in interest, and keeping the victim as well as the informant, protecting both their interests. For example, it has been provided that no arrest shall be made in any case of an offense punishable for a term of less than 3 years. And if the person has infirmity or is above the age of 60 years, he cannot be arrested without prior permission of the officer, not below the rank of DSP. Speaker, sir, we are aware how in many cases, especially in 498 in dowry cases, senior citizens are harassed, even at the cost of false cases that are registered. Even though the Supreme Court in multiple instances, even in Lalita Kumari and many other judgments, has enumerated that arrests should not be made whimsically, arbitrarily. Experience tells us that this was not followed. For the first time, by codifying this as a principle, interests of those people who are weak, senior citizens, are protected from arbitrary arrest. The provision on mandatory video conferencing during search and seizure also keeps in mind the interest, it also tries to balance harmoniously the interest of the victim as well as the need for transparent and fair judicial systems. We have also come across in our own experience people coming to MPs, people coming to MLAs with complaints that they went to the police station, but the police did not file an FIR saying that it does not come under their jurisdiction. वो भागते रहते हैं बेचारे यहाँ उधर उधर. By the time he finds out which police station comes under his jurisdiction, time would have lapsed and FIR and its sanctity would have lost meaning, and multiple instances cases have gotten quashed at courts because of the delay in filing of FIRs. For the first time, through zero FIRs and EFIR, this paradigm change has been brought in our criminal justice system, where an individual can report a case, file an FIR of a cognizable offense, any part of the country, and it is mandated on the part of the police to register the case and then forward the complaint to the concerned police station for investigation. This is again a very, very welcome move. In addition to that, it has come to our experience that when a complainant or an informant goes to a police station, files a case, after filing of the FIR, he is not aware as to what is the status of the case, what is happening with it. He will have to repeatedly go meet the station house officer. He is not aware, goes to the DCP's office, standing for hours together. He is not aware of the status of the case, status of the investigation. But in this Sanhita, it has been mandatory, provided that the police officer in 90 days shall inform the progress of investigation to the informant or victim by digital means. This is again an attempt at making the citizen the center of the criminal justice system and not the crown. In addition to that, one of the biggest challenges that our criminal jurisprudence, our criminal justice system faced was the abysmally low conviction rates.
If you compare our conviction rates to more advanced jurisdictions like Israel or Australia, our conviction rates is abysmally low. One of the reasons for this low conviction rates is the quality of evidence that is submitted before our courts. To address that, especially in serious offenses, it has been made mandatory for forensic science experts to visit the crime scene to collect forensic evidence in all cases that are prescribing punishment for 7 years or more. Speaker, sir, this is a truly revolutionary provision, because not only is this going to enhance our conviction rates, it is also going to protect those innocent, but those who are facing false allegations and false charges. Because one of the foundational principles of an effective functioning criminal justice system is to punish the guilty and to protect the innocent. And that can be done if our quality of evidence, the quality of our quality of evidence submitted before the court is increased. And this is a very important provision in that regard. Speaker, sir, the other big affliction, ailment of India's criminal courts is the delay in dispensation of justice. The moment a case is filed, you never know when the justice is finally dispensed with. And going to the courts itself is a vexation, is a punishment for both the victim, his family, as well as the accused. For the first time, investigation, submission of charge sheet, investigation pursuant to filing of charge sheet, pronouncement of judgment, all of these have been time bound by the statute itself. And even seeking of adjournments, which was a common practice for all, many lawyers who are in the house who have practiced in the criminal courts, we are aware that seeking of adjournments as a matter of right is a practice seen in our session courts, in our trial courts. And every delayed date creates a burden not just on the exchequer, but also on the families of both the informant, the victim, as well as the accused. For the first time, even this arbitrary adjournments has also been dealt with under the CRPC, where it has been provided that where the circumstances are beyond the control of a party, not more than 2 adjournments may be granted by the court after hearing the objections of the other party and for the special reasons to be recorded in writing. In a sense, this provision will make sure there is mukti from unlimited and arbitrary adjournments, which is a big ailment of this system. We have also seen, Speaker, sir, that in many cases, even serious cases, which has a political color, if there is a change in dispensation, the new government drops the prosecution of these cases. In Karnataka, the previous edition of the Siddaramaiah government dropped more than 1,600 cases belonging to the now banned and declared terrorist organization like PFI to meet their vote bank politics. And in many instances, Speaker, sir, these were very serious cases. Murder, culpable homicide, organized crimes, terrorist activities. More than 1,600 cases were dropped. And in many instances, even the victims were not heard. For the first time, under the amended CRPs, under the new Sanhita, it is mandated that where prosecution is supposed to be withdrawn, especially in cases where the punishment is 7 years or more, the victim side shall be given an opportunity of being heard. This is again a very important step in not only
diluting political interferences in criminal justice system and prosecution, but also placing the interest of the citizen, the victim, over and above the interest of the state. One of the points that Ravi Shankar Prasad ji made was about the condition of our under trials. Speaker sir, I remember when you had made an intervention earlier when the bill was proposed 4 months ago, you also had highlighted the attention of this house to the condition of our under trials. Lakhs of people who may be otherwise innocent are languishing in our country's jails because the wheels of justice are moving so slowly and painfully slow. In many of these instances, most of these instances rather, the under trials are young people. Any third year or a fourth year law student who would have visited a jail will understand that 80% of under trials are young people who are staring at a bleak future just because his cases are not being heard properly. In many instances, Speaker sir, they would have completed more time as an under trial than what they would have faced had they been convicted of that offense. To address that issue, a new provision has been made that if a person is a first-time offender, he shall be released on bail by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for that offense. It has also been made mandatory that where the under trial completes 1/2 or 1/3 of the period, it will be the duty of the jail superintendent to forthwith make an application in writing to the court in this regard. Speaker sir, I want to take a couple of minutes at the end to only highlight some monumental changes that have been made in the Indian Evidence Act. One of the biggest challenges that our courts would face in evaluating and appreciating evidence in today's day and age, where digital, IT, electronic evidence plays such a vital part of our everyday communications, was that our Evidence Act was not equipped to handle and appreciate the quality of electronic evidence. The thrust of the changes that have been made in the Evidence Act, which is now going to be replaced by the Sakshak Bill, is the importance placed on electronic evidence, digital evidence, and new age mediums of communication and presentation of evidence before the court. Evidence As has primary also... evidence. Speaker, sir? As primary evidence. Earlier, some electronic equipments were used as secondary. As secondary evidence. I'm coming Now- there, now it is Speaker, sir. I primary. want to explain this with an example. Speaker, sir, you must be aware, the House must be aware, that very recently, in the famous case of Akbaruddin Owaisi, he was acquitted. He was acquitted. Don't mention the name. That name should mention. He was acquitted, Speaker, sir, on the premise that the person who recorded the speech did not provide the original DVD-R to the investigating officer. But the speech was broadcast live, and millions of people all over the country, all over the world were witness to it. But the court ruled that the digital evidence that was submitted before it was not admissible because the person who recorded the original DVD did not provide it to the investigating officer. So all other copies which were available online, which were available at the time of making of this speech, were not considered either as primary evidence or as secondary evidence and were rejected. This was a major lacuna in our Evidence Act. That has been addressed by expanding the definition of primary evidence. And in the new section 59, in the definition of primary document,
new explanation has been added, and a video recording is which is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast to another. In such a case, each of the stored recordings is considered as original. So had this bill gotten enacted a few years ago, the fate of that person who made the hate speech would have been very different than what it is today, Speaker, sir. In addition to that, the provision has been also made to provide evidence, make available evidence through appearance of witness, accused, victims through electronic means. We have seen how in many instances, cases have gone on forever because either the witness or the expert witness or any other person could not appear before the court physically. Please conclude. So all of these are important changes that have been brought to the criminal justice system by the enactment or the introduction of these three important legislations, Speaker, sir. Speaker, sir, I must place on record the gratitude of millions of young Indians today, because I represent the demography in this house, for bringing this monumental reform. Because this is a philosophical change in the way we are approaching our citizens. This is a philosophical difference in the way the country and the country's criminal justice system is viewing our own people. This marks a departure from the colonial era legislations. And Speaker, sir, the United Kingdom and its press were aware that Narendra Modi government will herald and usher in such reforms. And they knew this on the very day that the people of this country gave Narendra Modi the mandate in 2014. I want to conclude by reading 4 lines from the editorial of the Guardian newspaper from the 18th of May 2014. On the 18th of May 2014, just after the election results were declared and the country's people had elected Modi ji to be the Prime Minister of the country with an overwhelming mandate, the Guardian wrote in its editorial, "Today, 18th May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. India under Congress was in many ways a continuation of the British Raj by other means." This was an observation, not by an Indian newspaper. This was not an observation done by the Panchajanya or the RSS organizer. This was the observation that was recorded by the Britain's foremost newspaper, The Guardian, on the day the people of this country voted Narendra Modi ji to office in 2014. And what has followed since then is a conscious effort towards decolonization of this country through the education policy, and now through this historic Sanhitas, which are going to overhaul the delivery of the criminal justice system in India. Finally, the meaning of the word Swarajya has attained true meaning, because the country is moving towards respecting Swabhasha, Swadharma, and Swadesha. Thank you so much, Speaker, sir. Thank you, Tejasvi ji. Now we'll hear another former police officer who practiced IPC, CRPC, and Indian Evidence Act, Sri Satpal Singh ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर दे और समय देने के लिए मैं आपका तथा अपनी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन तीनों बिलों के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के समर्थन में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय,
इन बिलों पर बोलने में मेरे लिए कि ऐतिहासिक दिन भी है और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात भी है। I restrain you. Don't utter such words inside the house. No, this is going beyond limit. I am. Everyone. But you are a single member in the house and you will speak when your turn will come. You have to wait for the direction of the Honorable Speaker and accordingly it will be decided. You take your seat. You take your seat. You will be allowed to speak, but you have to take your seat. You have to take your seat. You will be allowed to speak, but you have to take your seat. As a member of the House, you will be allowed to speak. Repeatedly, I have been saying this. And you stop casting aspersion on the chair. That you have done. That you have done. I don't want to quarrel with you inside this house, Mr. Satpalji. अध्यक्ष महोदय, Everybody has been waiting. I have a long list with me. I'm not sitting here to answer your questions. Satpal ji. अध्यक्ष महोदय, इन बिलों पर बोलने के लिए मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है और बड़ा सौभाग्य का समय भी। इसके दो कारण हैं। जैसे आपने कहा, पुराने कानूनों को लागू करने के लिए और करवाने के लिए मैंने 33-34 वर्ष इस देश की सर्वोत्कृष्ट पुलिस सेवा में बिताए। बहुत बार, यस सर, थैंक यू सर, यस सर। सर, मैंने बहुत बार देखा जब कोर्टों से फैसला आए, मैंने पुलिस को, राज्य सरकारों को, क्योंकि मैंने सीबीआई में भी काम किया, मैंने केंद्र सरकार को, इन एजेंसीज को अपने को असहाय पाते हुए देखा। मैंने पीड़ितों को, विक्टिम्स को कराहते हुए देखा। मैंने अपराधियों को और गुनहगारों को कानूनों की खिल्ली उड़ाते हुए, हंसते हुए देखा। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लोग बोलते थे, जब से सर्विस हमने ज्वाइन करी, ये बार बार हम लोग सुनते थे कि इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे बहुत बार, जैसे आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, मैंने मुंबई जैसे शहरों में काम किया और कई बार पुलिस, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल होता दिखता था और इसलिए पब्लिक के प्रेशर में, सरकार के प्रेशर में बहुत बार पुलिस जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स को भी अपनाती थी, जिसको लोग एनकाउंटर्स कहते हैं, पुलिस एक्शंस कहते हैं। समय मिलेगा तो मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा। और मेरा दूसरा सौभाग्य इसलिए भी है बोलने के लिए कि इस हाउस में आने से पहले, इन बिलों के पेश होने से पहले, जिन स्टैंडिंग कमेटी के सामने, गृह विभाग के जिस स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बिल आए, उस होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी का भी मुझे एक सदस्य होने का सौभाग्य मिला। इन बिलों पर चर्चा करने का और अपने विचार रखने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात, क्योंकि हम लोग एक सत्य सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं, इस सत्य सनातन संस्कृति के मूल और सार्वभौम ज्ञान के मूल वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया। वो मंत्र है, ओम इंद्रम वर्धन्तो काप्तुरः किरणमन्तः विश्वमार्यम अवघनन्तो रावणे। ये मंत्र मैं इसलिए भी कोट कर रहा हूं कि 2011 में मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने का मौका मिला और हमारा एक पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप था, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का। वहां पर जो अंग्रेज लोग आए, उनके जो प्रोफेसर्स थे,
ये बात बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि सारी दुनिया के अंदर पुलिसिंग सिस्टम हमने दिया है, चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब जगह हम लोगों ने पुलिसिंग सिस्टम दिया। मैंने उस समय भी उन अंग्रेजों के सामने, उन प्रोफेसर लोगों के सामने मैंने इस मंत्र को कोट किया था। अरे मंत्र ये कहता है, अगर हम जीवन में, समाज में, राष्ट्र में सुख, समृद्धि, शांति चाहते हैं, अगर हम सम्मान चाहते हैं, सतत प्रगति करना चाहते हैं, तो देश में कानून का राज चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, सबको यथायोग्य आजादी। इस मंत्र के अंदर ये कहा गया, नंबर 1, अच्छे विचारों, परंपरा, रीतियों, व्यक्तियों और संस्थाओं का संरक्षण करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। इंद्रम वर्धन तो अब है। दूसरा, अबोध, अज्ञानी, दुर्व्यसनी, आपराधिक प्रवृत्ति वालों को समझाओ, उनको शिक्षा दो, कानून बनाओ और कानून का प्रचार और प्रसार करो। और तीसरा ये भी कहते हैं कि अब घनन तो रावण है, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, जो सुधरना नहीं चाहते, जो इनकॉरिजिबल, अंग्रेजी में इसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं, ऐसे दुष्टों को, सातिर हार्डकोर अपराधियों को, आतंकवादी जिहादियों को, चरमपंथियों को, उनका दमन भी होना चाहिए, समन भी होना चाहिए, दफन भी होना चाहिए और उनका जरूरत पड़े तो उनका वध भी होना चाहिए। और मैंने कहा था, इस देश और दुनिया के अंदर, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबसे प्रथम संस्कृति विश्ववारा, सारी दुनिया को कानून सिखाने वाली, सारी दुनिया को संस्कृति सिखाने वाली इस देश की संस्कृति रही। उन्होंने इसको हमको किया। इन तीनों उद्देश्यों को लेकर के मैं कहता हूं आज के विधेयक आए हैं। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे संगठन सरकार में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूं। हम ये भी कहते हैं कि इंसाफ और न्याय से बढ़कर के दूसरा कोई अमृत नहीं, दूसरी को दवाई नहीं। और इस अमृत काल के अंदर ये तीनों विधायक, तीनों बिल मुझे लगता है इस अमृत काल का एक आधार बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा था, इस पुरानी आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो अभी तक चालू है उसमें बहुत कमियां थी और कई बार हम लोगों ने जब से सर्विस ज्वाइन करी, हमने जजों को भी सुना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सुना, इस देश के चीफ जस्टिस को भी सुना। सब लोग ये बोलते थे कि केस से इसमें सुधार होना चाहिए, करना चाहिए। बहुत कमियां थी। लोग बोलते थे, आज आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे कि जिस प्रकार का एक जटिल समस्या, जटिल व्यवस्था थी, इस जटिल व्यवस्था के अंदर लोगों को, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता था। बहुत खर्चीली, वर्षों तक केस पेंडिंग है। कुछ तो कई की पीढ़ियां मैंने सीबीआई के अंदर देखा काम करते हुए, 30-40 वर्षों तक क्रिमिनल केस जो है हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहे और उसमें इन्वेस्टिगेशन की भी प्रमाण की उसकी आज्ञा नहीं दी गई। ऐसे बहुत केस मैंने देखे। जिसको हम न्याय का मंदिर मानते हो, वह न्याय अगर मिलता भी थे, देरी से मिलता, जैसे आप भी कह रहे थे कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं देश के, श्री KR नारायणन जी, उन्होंने एक बार चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस में को एड्रेस करते हुए कुछ बातें कही थी, मैं उनको कोट करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था, द कोर्ट्स इन इंडिया, द कोर्ट्स ऑन इंडिया आर नॉट कैथेड्रल, दे आर नॉट टेम्पल्स। द कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कैथेड्रल, बट दे आर कैसिनोज। वो दिवाघर है, दे आर कैसिनोज। Judgment depends on the throw of the dice. Judgment depends on the throw of the dice by the advocates, which are the advocates जो भी throw फांसे फेंकते हैं, उनके ऊपर judgment depend करता है। Judges do not give justice. Justice do not give justice. They give judgment. They give judgment. They pronounce judgments according to the evidence put up before them. Here the accused is more protected than the victim. अभी हम लोग जो मालूम है, केस हमको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रात के अंधेरे में, रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। पहले इसे हुआ, ऐसे केसेस हैं।
और वो भी आतंकवादियों के लिए, जो आतंकवाद के उसमें जो बड़े बड़े बम ब्लास्ट में जो लोग लिप्त थे, उनके रात के अंधेरे में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है, पर गरीब लोगों के लिए 10 को लग जाते उनको सुनने की जब बारी आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार जो है ये हमारे जो कोर्ट, हमारा जो पुराना सिस्टम था, ये बात पहले भी आई है कि कोर्ट में लगभग 5 करोड़ केस अभी भी पेंडिंग है, जिसमें अराउंड 4.3 करोड़ जो जिला कोर्ट में पेंडिंग है। लो कन्विक्शन रेट, इवन रेप में, मर्डर के कई बार हम लोगों को मालूम है, जज भी समझता था कि मर्डर इसने किया है, रेप इसने किया है, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता। कमियां बहुत हैं, कोर्ट पुलिस की कमियां निकालते हैं, पुलिस वाले कोर्ट की कमियां निकालते हैं, विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, का कारण बहुत हैं। और कई ऐसे भी हमारे सीआईपी अभी जो आया है न्याय संहिता के अंदर, कुछ अपराधों के अंदर दंड की राशि बहुत कमी थी। 10 रुपए का भी दंड, 100 रुपए का भी दंड, 500 रुपए का भी दंड, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। अंडर ट्रायल की बात पहले आ चुकी है कि 77 to 80% अंडर ट्रायल